This question is very important for SS class 12, SS 12 के लिए. ये SS एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन. देखिए very important question है, previous year question है. So I will solve it. So that the function f from R to R defined as f of x is equal to twice x minus 3 is inversible. Also find the inverse of f. Solution. कैसे solve करते हैं देखिए. F is a function from R to R. This is given. F of x is equal twice x minus 3. So that this f is inversible. So to show f is inversible, first we have to show that f is 1 1. So step 1, f is 1 1. So we have to show that f is 1 1. F is 1 1. How to show that f is 1 1? Let's let तो 1 1 का मतलब क्या है. ये सेट R है, राइट. ये R है, ये भी एक सेट R है. F is a function from R to R. We have to show that every distinct element of R have distinct images. That means if this is x1, if this is x2, this is not possible that image of f1 is also x. This ये x1 है, ये x2 है, ये एक इमेज है. ये नहीं हो सकता है कि ये अगर y1 है, x1 का भी इमेज y1, x2 का भी इमेज y1, ऐसा नहीं हो सकता है. x1 का जो इमेज होगा, y का जो इमेज होगा वो डिफरेंट होगा. मतलब x, if x1 and let x1, x2 belongs to R. सेट जो है ना वो ये f is from R to R. So let x1 is, what is the domain? Domain is R. x1, let x1, x2 belongs to R. And x1 not is equal x2, right? अभी हमें क्या मिलना होगा? f of x1 not equal f of x2. अगर यहाँ से x1 not equal x2 होते हैं, फिर भी f of x1 is equal to f of x2 अगर मिल जाता है, तो ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा, many 1 होगा. तो देखिए, let x1 not is equal to x2, then twice x1 not is equal twice x2, right? This will implies this. Then twice x1 minus 3, अभी माइनस 3 बोथ साइड से माइनस 3 कर दीजिए, माइनस 3 8 कर दीजिए. ट्वाइस x2 माइनस 3, ये भी इक्वल नहीं होगा. This will imply f of x1 not is equal f of x2. So f is 1 1. Hence f is 1 1. Okay. Second, you have to show f is onto. वन प्रूफ करने का और भी एक तरीका है. I will show in the last of the video, to the last of the video, and another method to show f is onto. F is 1 1. So now we will show step 2. Yes, step 2, right? Step 2. Step
to f is onto, we have to show that f is onto. To show f is onto, what we will do, let y be any element belongs to R. Y belongs to R. It's an arbitrary element. Okay. Then can we say ये कोडोमेन जो है ना वहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए कोडोमेन, कोडोमेन हमें ये y एलिमेंट जो R में लिया है वो कोडोमेन में लिया है, राइट. कोडोमेन, ये कोडोमेन ये R है, ये भी R है, यहाँ पे एक एलिमेंट y लिया. We have to show that there exists x such that f of x is equal to y. Okay. फंक्शन क्या है? Okay. Let y belongs to R. We have to show that there exists x belongs to R. There exists x belongs to R such that f of x is equal, function क्या है, 2x minus 3, f of 2x minus 3 is equal to y, equal to y. So we have to show there exists x such that f of x equal this equal to y. क्या यहाँ पे एक एलिमेंट y है तो ऐसा एक एलिमेंट x एग्जिस्ट होगा क्या? If y is equal twice x minus 3, then twice x is equal y plus 3. This will imply x is equal y plus 3 divided by 2, which is equal half of y plus 3. अभी देखिए, since half of y plus 3, since y is belongs to R, 3 is belongs to R, y plus 3 belongs to R, and half of y plus 3 also belongs to R, since y plus 3 belongs to R. Because y plus 3 belongs to R, comma half belongs to R, so इन दोनों का multiplication भी belongs to R होगा, right? This will imply half of y plus 3 is equal to x is belongs to R. Hence, for any y belongs to R, there exists x belongs to R such that ऐसा एक एग्जिस्ट y क्या नहीं, हाँ ऐसा एक एग्जिस्ट y में है such that कैसा, ये देखिए such that y is equal to x minus 3, right? So for any y belongs to R, there exists x belongs to R such that y is equal twice x minus 3, which is equal to f of x, right? So y is equal f of x. ऐसा x exists होता है R पे such that, so for if y belongs to R, then there exists x here such that f of x
f of x is equal to y ऐसा एक एक्सरसाइज करते हैं सो हमें यहाँ पे क्या मिला देखिए x is equal half of y plus 3 सो अभी देखिए इन्वर्स फाइंड f इन्वर्स लास्ट में क्या है इन्वर्स ऑफ f inverse of f so we have to find inverse of f right inverse of f we have to find inverse of f since inverse मतलब यहाँ पे ये r है ये भी r है inverse function f inverse कहाँ से कहाँ सर so since it is 1 1 on 2 now hence it is inversible right ये 1 1 हुआ 1 2 हुआ दोनों हुआ ना right यहाँ पे ये f is 1 1 यहाँ पे मिला f is 1 1 उसके बाद मिला now we have to check that f is on 2 क्या हमने on 2 check किया yes for every y belongs to the codomain there exists x in the domain such that f of x is equal to y for any y belongs to r then there is this x belongs to r such that y is equal to f of x so then hence f is on to 1 1 हुआ on 2 हुआ right अभी क्या होगा ये 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव अगर 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं तो उसको कहते हैं बाइसेक्टिव हेंस f इज ऑन टू सो f इज inversible proved ये प्रूफ करना था कि f is inversible प्रूफ करना है हमने प्रूफ करके दिखा नाउ फाइंड f इनवर्स फाइंड करना है since f of x what is given f of x is equal twice x minus 3 we have noticed when we prove that it is onto we have noticed okay now we have to find onto right we have to find the inverse function given f of x is equal to this let y is equal twice x minus 3 okay let y is equal to x minus 3 this implied वो पहले भी दिया था हमने दिखा था x is equal y plus 3 divided by 2 ये हमने कैलकुलेट करके निकाला ये आपको समझ में आया है ना x is equal to y plus 3 divided by 2 this will imply x is equal half of y plus 3 right so what is f inverse here from here we can make f inverse x is equal half of x plus 3 right so यहाँ से हमें मिला so this is the inverse function from this we have made the inversible function here right now you can check is it inversible is it inversible you can check f of x is equal हमने हमें क्या दिया था twice x minus 3 दिया था मैंने कहा f inverse of x is equal half of x plus 3 so this is the inverse function problem यहाँ पे खत्म हो चुका है solved right
सो 1 यहाँ पे अगर पुट करते हैं f ऑफ 1 निकाले 2 माइनस 3 इक्वल -1 अभी -1 यहाँ पे पुट कीजिए f इनवर्स में f इनवर्स -1 पुट कीजिए तो वहाँ पे हाफ ऑफ -1 प्लस 3 हाफ ऑफ -1 प्लस 3 and this is equal to half of -1 plus 3 is equal to 2 and this will equal to 1 so 1 element को f फंक्शन ने 1 को -1 में लाया था f इनवर्स ने -1 को 1 में लाया है so yes it is inversible and inverse function is this is correct because f ने जो फंक्शन उन्होंने क्या किया था f फंक्शन ने क्या किया था 1 एलिमेंट को -1 एलिमेंट में लिया था और f इनवर्स फंक्शन ने क्या किया -1 एलिमेंट को 1 एलिमेंट में f इनवर्स ने लिया 1 को -1 में f ने लाया था और -1 को 1 में f इनवर्स में लाया है so f inverse is this is the f inverse correct. Now I will show the another method to show f is 1 this is optional method for 1 के लिए ये ऑप्शनल मेथड है सो ये डोमेन है ये कोडोमेन है यहाँ पे x1 y1 दो लीजिए है ना तो हमें दिखाना है यहाँ पे x1 है एलिमेंट है यहाँ पे x2 है इन दोनों का इमेज जो होगा वो सेम नहीं हो सकता है डिफरेंट होगा अगर x1 का भी ये अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा दिस इज मेनी टू 1 राइट दिस इज मेनी टू 1 तो ऐसा नहीं है ये हमें से दिखाना है लेट x1 x2 ये सेकेंड मेथड ये r दिया था हमें ये भी r है इस फंक्शन में राइट लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r and we will say that image of this is f of x1 का image we have to show that f of x1 का image 1 होने के लिए f of x1 का इमेज f of x2 का इमेज दोनों सेम नहीं हो सकता है तो अभी हमने क्या किया f of x1 का इमेज f of x2 f of x1 और f of x2 दोनों सेम ऐसा हमने मान लिया है तो हमें क्या मिलना होगा x1 should be also equal to x2 दोनों का इमेज इक्वल है इसका मतलब ये है दोनों एलिमेंट ही इक्वल है इसीलिए इन दोनों का इमेज इक्वल है राइट दिस विल इम्प्लाइज twice x1 plus 3 is equal -3 था ना फंक्शन में yes -3 f of x equal twice x minus 3 so -3 right so ये -3 है twice x1 -3 और यहाँ पे twice x2 -3 होगा यहाँ से -3 कैंसिल होगा twice x1 is equal twice x2 this will implies x1 is equal x2 so hence f is 1 1 ऐसा भी एक मेथड है hence f is 1 1 ये भी हो सकता है राइट सो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व